Assalamualaikum ji, Mr. Mudassir. How are you? Walaikum Assalam. I'm well. How are you? Apologies, I'm about 10 No, that's 15 minutes fine. late. That's fine. We were late as well today. Jumma ki break ho gayi and we were not very prepared for that. But anyway, so this is Mr. Mudassir and he's the Managing Director of Tinopal Surgical. And आज का जो हमारा event का जो purpose है, that is कि हम लोग जो young entrepreneurs हैं, उनको बुलाएं जो इस field में या कदम रख चुके हैं या फिर they are trying to pursue this career. Not today, then maybe tomorrow, but they are thinking towards it, and it would be great if they can learn something from you. आपकी अभी तक की जर्नी जो रही है, आपका फैमिली बिजनेस है माशाल्लाह काफी बड़ा है और काफी लाइक अरसे का है. Since 1976. Wow, that is amazing. 1976. तो तब से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ है, किस तरह से आपने प्रोग्रेस की है, ये लोग आज किस तरह से डिफरेंटली कर सकते हैं, how they can progress in the field. That is what the event is all about. So before we begin with the question answers, I would really like if you can introduce yourself to the audience. Absolutely. Ji, Assalamu alaikum. My name is Mirza Mudassir Najeeb. I'm MD of Tinopal Surgical Corporation. और Tinopal जो है ये surgical instruments export कर रही है since 1976. 1973 में हमने start किया था surgical का business. I'm sorry. 1973 we started the surgical business. But before that, in 65, जब जंग हुई थी पाकिस्तान इंडिया में, तो मेरे parents, well, my father and his brothers, they went to the border and they picked up जितना वहाँ पे मेटल था, जो भी shells वगैरह पड़े थे, जो भी मेटल उनके हाथ आया, उन्होंने उठाया और वो लेके अपने वर्कशॉप में, मेरे ताबू की एक वर्कशॉप थी, एक खराद मशीन थी. He just had a खराद machine. You might know it's a lathe machine. If anybody knows what a lathe machine is, good. So एक खराद machine थी उनके पास और ये भाई थे चार. They picked up the metal and they took it to the shop. They melted it. Melt करके उन्होंने चूल्हे बनाए, gas stoves. Gas stoves they took to Karachi. Karachi वहाँ पे बेचे उन्होंने in the beginning. And 3-4 years this is what they did. They made gas stoves in the beginning. And one of the brothers, he went to Lahore to Heli College. Mike is a little away. All right, one of the brothers, he went to Heli College. His name is Akram. He's the CEO of the company. He's in US right now. He runs the warehouse in US by the name of Fireside Surgical. अब वो मेरे ताया वो इकराम साहब उन्होंने जब किया BCom Heli College लाहौर से, फिर वो इटली गए. तब वीज़ा वगैरह तो नहीं था चाहिए होता. So he just went to Italy, grabbed his bag, and he figured, चलो Italy चलते, let's find out some business. Italy में he faced a lot of problems. वहाँ पे corruption बहुत थी. तो he just grabbed another ticket और Italy से वो न्यूयॉर्क चले गए. न्यूयॉर्क जाके he started थोड़ा बहुत शुरू में तो dishwashing ही रही. Then he finally found एक बंदा उन्हें मिला वहाँ पे Milton and Lawton companies हैं. अगर surgical से किसी का ताल्लुक है, they might know it's a big Fortune 500 company. वहाँ से उन्होंने एक बंदा उसको प्लग ऑफ किया और उसको हायर किया और दे स्टार्टेड अ कंपनी बाय द नेम ऑफ फाइन सर्जिकल. फिर हमने यहाँ पे टीनोपाल सर्जिकल स्टार्ट की, जो कि पहले टीनोपूल कहलाती थी. आई डोंट नो व्हाई दे कॉल्ड इट टीनोपूल, बट दे चेंज इट टू टीनोपाल. Don't ask me why they did that. My Thai decided to do it. I don't want to tell that. No, I don't know. My Thai just decided. He figured it's a cleaning chemical. It signifies cleanliness, so we'll just call it Tinopal Surgical. Clean instruments. So this is how the journey started. And ever since we had first, सबसे पहले जो हमारे 7. I have done BA, BBA. And then I did the MBA from University of Central Punjab, Lahore, BBA भी वहीं से. And then I went to Canada. I did BA on. लेकिन अब तक I'm running the company, and it's been a joyride ever since. It's fun. So this is our story. So basically, another question related to your career. Did you always know that you had to join your family business, or was there an option that you might not? Well, I actually did want to go to army. I wanted to fly a plane, but that was more like a childish thing. Oh, yeah. I think I was going to end up a businessman. I wanted to be an astronaut when I was 6, so that's I think that was a childish thing. Yeah. That was probably a dream. Lekin ye ki I think I wanted to become a businessman, and that's what I became. Or I'm enjoying this. You become something you like to do, something you like to think about, something you like to think before you sleep, something that you dream when you sleep, something you wake up and think about. That's what I did. Or Alhamdulillah, I have another company, Crown Surgical के नाम से,
And lately I added another company, Allied Trading के नाम से, जो लाहौर में हम garments का काम कर रहे हैं, export हमने start की just recently. So this entrepreneurship hasn't ended yet. That's great. It's taken An entrepreneur is always thinking about new ideas. Always thinking about every new day. stuff. Yep, absolutely. Right, so what is Crown Surgical all about? It's just another branch of surgical business. We wanted to start business in China, and we wanted to start with a new brand. Right. So And you then- import from China or you export? No, we from export China. China. All right. All right. Yeah, we have contracts with China. We have Okay. contract with the United Nations. We export to them, and that's why we started the Crown Surgical Company. Right. That makes sense. Right. So, all right. So, just looking at this generation, I mean, today's kids, today's people who aspire to be entrepreneurs, how do you think they do things differently than you did back in 2007? Differently. I don't think there's a different approach to entrepreneurship. It's No. all about engaging yourself in risk and in hopes of profit. And it's all about being persistent, and it's all about perseverance. I don't think you can do it differently. There's a universal method of approaching entrepreneurship, and I think this is basically what it is. Perseverance. That is right. Yeah. Persistence, I would say, like, Yeah, you you know. gotta persevere. I mean, every day you see. Keep trying. Keep trying, you Yep. see the challenges, and you know, all those things where people tell you it might not work, it will not work, but then Don't you let have to do anybody that. bog you down. Right. Yeah. Alright, so today's world, how do you see that, like, how do you think that today's generation can find export clients? Because that is like literally the biggest question in everybody's mind. Everybody who's here wants to get more clients, but I mean, there is no right or wrong way to get that. But what would you suggest? What has helped you so far? And what do you think that can help people as well? Well, our formula has been that we develop agents in foreign countries. It could be an agent who is already in this business, but we mostly try to find a new person who's aspiring to start a business, and we guide them. We teach them things about our product, things about our market. To thoda bahut ye sab available on internet as well. This is the age of technology. Now, if you want to, ignorance basically is now a choice. See, आपने कुछ भी सीखना है, you can just get on the internet, you can figure things out. It's not a problem anymore. So उसमें what we do is we find an agent, we enable them, and then we tell them where to go, what customers to meet, and this is basically how we do it. And online जो है right now, you guys have a new, you guys have a lot of developments coming up, especially with the Meta sphere coming and Facebook coming up with the Meta and everything else. You guys have Instagram, you guys have Shopify, you guys have Amazon. There's so many avenues that you guys can go straight to retail, not just exporting to a distributor and then the distributor goes to the buyer. You guys can go straight to the customer. Usme, you guys can enjoy more profits and you guys can enjoy more fun in the market. You guys can be in control. So I would suggest that you guys should try these new avenues, these digital avenues like Instagram, like Shopify. You can try Facebook, but not really. I'll take that back. Instagram and Shopify and Amazon. These are the platforms that you can use to reach the client and just stick to it. It's not going to happen in a year. Coca-Cola, they sold one bottle in the first year, and now they sell billions a day. So you stick to it, and you'll also sell a billion a day. It only takes time. What do you think is a better way of doing business? Is it B2C, as you mentioned, or B2B, the way you currently work? Better way. It depends really what you want to do. I mean, the thing with B2B is that It's very relative. I wouldn't say it's. But I'm talking in terms of what people here think is well and what actually is there that. It's goal oriented. Yeah, but still, when you are in bulk manufacturing, you know, you B2B have is to produce basically it for once, volume. right? Yeah, right? yeah, it's for it's volume. It makes easier. It's cost efficient, and you know, you just have to focus more on the product side of it, on Right, the right. manufacturing Just side of it, manufacturing right? side of it. Not the product, Not not the the design sales, sense, right? Not no, the no, sales, no. like nothing like that. You just need 2 to 3 people, and you know, you do everything for them. So in that case, B2B is better. But why would you like? What is it Less that risk. would? Yeah. B2B is less risk, then you have less profit.
but you have a lot of volume that keeps the machine running. Exactly right. So that's one thing that, I mean, even when people suggest us, for example, to go in that direction, this is the first thing that comes to my mind, because, you know, with manufacturing, bulk manufacturing, It's you very have that. capital intensive. Yeah. It's very capital intensive. If you want to get into bulk manufacturing, you need a full factory, and you need then you need a big pocket to sort of I'd say you're sponsoring your client, right? When you're selling your products to the client normally takes एक दो तीन माह चार माह तो लगाता है आपको पेमेंट करने में, आपको एक दो माह लगता है माल बनाने में, दो तीन माह में आपकी पेमेंट आ रही है, सो आपको 5 महीने की रास चाहिए. So for that, उसमें आने के लिए, for capital intensive business, you need a lot of money, and if you have a lot of money, then go for it. Basically, it depends upon. But if you want to start small, exactly. Right. See, it's relative, right? So if you want to start small, if you want to start with, let's say, a few $1,000s or a few $100s, start from home, start online, and deliver your idea. First, you have that idea, then you develop that idea, then you deliver it. That makes sense. Yeah. Depends how you deliver it. When you're selling a product, you're basically selling yourself. And you have to make sure that you sell quality. You don't sell a lie. If you're selling a lie, you will not stay in the game for long. You'll sell it 1, 2, 3, 4 times, that's it. You're done. You want to stay in the game for the long run, you got to do it right. You got to do as you say you're going to do. You got to deliver quality. Right. And what's your mode of working with the agents? Is it commission based, or you pay them a full-fledged salary, or? Well, our formula once again is they buy from us. There's no commission. All right. They buy from you. They buy from us, and they can sell it for as much as they want. That makes sense, right? And what were the most important challenges that you faced so far in your business? In our business, challenges. But I was born into this, so challenges are fun. That's true. And but I mean, you know, the most debilitating challenge that I faced was bringing change into our family business. It was terrible, literally terrible. Bringing a computer to my dad's office was a mission. I went to my dad. I was like, okay, we need to start, IT. This is back in 2006-7. He was typewriting everything. So मैंने उन्हें कहा कि IT लेके आते हैं, and he's like, ठीक है, I'll give you budget and you bring IT. I was like, okay, what's the budget like? He's like 12,000 rupees. I was like, what? 12,000 rupees? But I figured it out. मैंने कुछ आए हुए थे Hafiz Center में कुछ computer auction servers. I got a server for 3,000 rupees. I had a laptop myself. I got a software developer. उसको मैंने दिए 3,000 रुपए per module. And दो लड़के मैंने hire किए, started data entry, and from 12,000 my journey started. Now that IT that I set up, our company is based on it. That is great. So how have you really implemented technology? Like, is it in the form of ERP or other processes as well? We have ERP, we have attendance, we have surveillance, we have as much IT we can involve in a manufacturing facility. That is great. Yeah. I'm sure that must have been too hard. I mean, I am facing this myself, so I mean, it's a battle every day. Just not with, I would say, for example, you had this with your dad, I have it every other day with my mom, but not just limited to her. Everyone in the company, right? From the top level management to literally. ऐसे भी होता था कि I would set up a computer एक जगह पे जब माल वगैरह receive होता है वहाँ पे मैं set up करके जाता था computer. Next day I would come and I would see the keyboard in pieces. I would see the mouse in pieces. लोग समझते थे कि ये कंप्यूटर आ गया है तो ये हमसे हमारी जॉब ले जाएगा, ये हमारा कंट्रोल जो है ना, हम जो कंपनी को हॉग करते हैं, कंपनी को जो हम लिमिट करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करके इंफॉर्मेशन को होल्ड करके, वो सब हमारे हाथ से निकल जाएगा. But I tell you, people figure new things out. You bring IT, they'll try to trump the IT as well. So ये तो चलता रहता है in the place of work. We try to discipline our employees, and our employees try to discipline us. So it keeps this is a vicious loop. It keeps it happening. So okay, the next question is regarding the products. क्योंकि काफी ज़्यादा जो लोग यहाँ पे आए हैं, either they belong from the industry or are trying to pursue that industry. So a question for them is that which products are the most important? If they are starting from scratch, which are the product categories that they should focus most upon? Well, if you are in garments, it's just a relative question again. Right. Yeah. No, in surgical. In surgical. Yeah.
I mean, Well, so you they can are start with, in surgical, you can start with dental. dental, Yeah. right? And Dental is a good way to go. Dental se aap start kar sakte hain. You can start with hollowware. right. हाँ. Why dental? No. Dental is not such a vast field. जो बाकी surgical की field is very vast. You bring a catalog. There's like 1,000 pages. It's really hard to bring all the products to your product matrix. But the dental products, you just have scalers, you have probes and packers and pliers. That's pretty much it. Dental catalog is just as big as this brochure, pretty much. Right. Because over here we make non-power tools made of metal. So usme there isn't a lot of instruments that are being made anyways. And since ever since the technology, just made improvements in UK on the hospital side, we have Da Vinci robot doing surgeries, and we have other technologies coming. जिसकी वजह से हमारी laser जो surgeries आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारी काफी instruments that cut, they don't sell anymore. So there's technology coming in surgical industry as well, but it'll never replace the manual work of the surgeon. I also think It will never replace that. This is one industry, or surgical industry ऐसी है कि इसमें technology जितनी मर्जी आप ले आओ. I was speaking to a German. मैंने उसे कहा कि आपके पास हर किस्म की technology है. You have, BMW has these manufacturing shops जिसमें वो lights off कर देते हैं और गाड़ी हर घंटे बाद एक बंद के निकल रही है from the assembly line. I was like, why don't you do this with surgical instruments? He says, well, this is also my observation as well. I'm 42 years old now. He says कि जो manual काम है इसका कोई भी manual बदल नहीं है. Surgical के ऊपर manual काम आप उसको हर किसी भी बदल नहीं change कर सकते. उसका कोई replacement नहीं है. Not even a robot can do what a man can do with surgical instruments or वो जो wheels है उसके. So this industry is pretty much safe from any threat from technology. It's not going to replace us. It's not going to replace the manual work. This is a very promising industry जो surgical की है और इसमें there's a lot of room always. Humans are growing, and every human needs surgeries, or they have to go to the hospital, and every one of us has been to a hospital. Every one of us has had an instrument work on us. So basically, this is something that that is very promising as a business for you guys, for all of you. There's a big market. There's a big High market. industry का जो है ना, I mean, there might be a chance कि technology replaces it, except for surgical, because surgical instruments बंद होने का मतलब है the whole profession of doctors is gone, and that will never happen, right? No, So never. I think this is definitely a very very safe industry. हाँ. So ज़्यादातर competition किस industry से है, किस country से है, sorry? We are the most cost competitive country manufacturing surgical instruments. इसमें there isn't really any competition. That's the best thing. Really, not even China, Vietnam. Internal we have. India. Internal we have. Internal, yes. Internal competition तो बहुत fierce है जी. That is, I think, that is very healthy. Internal competition is good. होना भी चाहिए. होना वो चाहिए. fierce भी है, वो तो सब है. लेकिन जो international competition है, we are the cheapest, and we make very good quality as well. So we don't really, there isn't any competition. China, जैसे Shani ने कहा, China was in competition with us. That would have been back in 90s. China is buying from us now. Wow. चाइना का इशू ये है कि वहाँ पे मैनुअल लेबर की प्राइस बढ़ी. सो दीज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे रिक्वायर मैनुअल लेबर. जहाँ पे मैनुअल लेबर महंगी हो जाएगी, वहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स महंगी हो जाएंगी. सो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, fortunate for the business and unfortunate for the humans, human labor is not as expensive as we have in US or elsewhere. अब US की बात करें तो plumber even they charge you $40 an hour. यहाँ पे प्लम्बर को घर बुलाओ, $40 आपसे मांगे, you're gonna beat him down. That's not gonna happen in US though. वहाँ पे आप दोगे उसको $40 an hour. So labor यहाँ पे सस्ती है. That is why this business is here to stay. It's not gonna move. And which are the most important markets? That US, China, Germany, US. Russia, South Africa, Australia. These are the very very hungry Can you markets. repeat them if anybody wants to write? Presently और future में single use का chance है या सिंगल यूज में चाइना reusable में का? बहुत चांसेस है, और सिंगल यूज यूएस तो उसमें खासा आदी हो गया हुआ है, और जर्मनी भी उस तरफ आ रहा है, इवन यूके भी आ रहा है सिंगल यूज की तरफ. रियूजेबल का कम होता जा रहा है चार्म.
ये सिर्फ आपको ज़्यादातर कार्डियोवैस्कुलर यूएसए, कनाडा या नॉर्थ साउथ अमेरिका तो सिंगल यूज ही है ना? जी, वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंगल यूज है। सिर्फ साउथ अमेरिका में यूजफुल चल रहा है, नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा सिंगल यूज ही चल रहा है। बट दीज आर वेरी हंग्री मार्केट्स, यू कैन नेवर फिल देयर एपेटाइट। जितनी मर्जी फैक्ट्री बन जाए, यू कैन नेवर फिल देयर एपेटाइट। एक तो वो भी ग्रो कर रही हैं और रिलेटिवली हम भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जितनी उनकी एपेटाइट ग्रो कर रही है उतनी यहाँ से सप्लाई ग्रो नहीं कर रही। So there's always a gap, and there's always room for new players to come in and fill that gap. हम 18 घंटे हमने फैक्ट्री चलाई होती है, and we're still unable to fulfill the demand. और there's more players coming, and there's always more demand also developing. इसमें कूदें इस business में और you will enjoy it. मेरा क्वेश्चन है, चाइना जैसा कि प्लास्टिक की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? वो क्या सेम यूजेस है या उसे नहीं, उसमें इश्यूज हैं। प्लास्टिक में इश्यूज बहुत है। प्लास्टिक में आपको लाइसेंसिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें सर्जिकल में आपके पास, आपको पता है कि आपका ASTM, इफ यू नो व्हाट दैट इज, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं ये ASTM ऑफ मेटल फॉर स्टेनलेस स्टील। तो इसमें उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए हुए हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, जिसकी इंस्ट्रूमेंट्स बनती हैं, 3-4 स्टील्स जिसकी इंस्ट्रूमेंट्स बनती हैं, और उनकी लाइसेंसिंग भी इतनी मुश्किल नहीं है। यू कैन गेट ISO 9000, you can get ISO 13485, you can get CGMP and you can get CFDA. These are 4 certificates that you need to basically sell instruments. But when you come to plastics, you need 13485 clause 2. और उसके बाद प्लास्टिक्स की आपके पास बायो कंपैटिबिलिटी की जो है टेस्ट हमेशा चाहिए। वो आपकी कॉस्ट को बढ़ा देता है, तो वो देन इट्स यूजलेस। आपको स्टील की जो इंस्ट्रूमेंट है सस्ती मिल रही है एज अपोज्ड टू प्लास्टिक, देन हु वुड वांट टू बाय द प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट जब उसका मकसद ही कोई नहीं है। प्लास्टिक की तरफ वो इसलिए आ रहे थे कि शायद सस्ता हो जाएगा, लेकिन जब प्लास्टिक की तरफ वो आए तो उसमें ये रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स उनको बहुत आ गई, तो उसकी कॉस्ट जो है ना वो फिल हो गई। क्योंकि प्लास्टिक्स वैसे भी चंद इंस्ट्रूमेंट्स में आया है, कटिंग में तो आया नहीं, नीडो होल्डर्स में भी नहीं आ सकता, हीमोस्टैट भी कोई खास नहीं बना प्लास्टिक का, तो वो बस प्रोब्स वगैरह हैं, थोड़ी बहुत डेंटल में कोई हैंडल वेंडल प्लास्टिक के बन जाते हैं, but that's pretty much it. So what about the UK market and the Middle East market? What do you think and what would you suggest? In the Middle East market, you have a lot of plastic surgery instruments that they buy, काफी ज़्यादा। Middle East में जो otherwise जो hospitals हैं वो गवर्नमेंट लेवल के हैं, उनकी बाइंग जरा डिफरेंट है। आपको गवर्नमेंट टेंडर्स चाहिए, आपको वंस अगेन एजेंट्स चाहिए इन UAE। यू कैन गो टू UAE की बात करते तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में चले जाएं, यू कैन मीट समबडी देयर हु कैन मे बी हेल्प यू फिल द टेंडर्स फॉर द हॉस्पिटल्स। इस तरह आप UAE को चेक कर सकते हैं। जब और साथ में ये जो है UK में तो देयर मेनी कंपनीज, यू कैन जस्ट गो ऑनलाइन, फिल आउट द फॉर्म्स। वो न्यू वेंडर्स के लिए उन्होंने फॉर्म्स रखे होते हैं वहाँ पे, यू कैन कॉन्ट्रैक्ट देम एंड यू कैन give them your samples and give them a quote and take it from there. Questions right now we have a designated time for that, so like 15 minutes में we'll come to the question answers round. अगर आप लोगों में किसी और के भी कोई सवाल है so please write them down, और फिर जब हम लोग आते हैं ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ तो फिर पूछते हैं, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हर कंट्री के लिए कोई ना कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह चाहिए होती हैं, बिकॉज फॉर अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू आई मीन दे टेक ऑब्वियसली दे चार्जेस a lot of money for that, right? So how do you think that they can cope up with that? या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे you don't need the certifications or anything? No, with this line of business you need certifications. Even now when we talk about third world countries, there's more certifications. Yes, you'll be surprised. You go to Brazil, they'll rip you off with certificates. They'll be like, "Aapko DHO ka leke aao, Pakistan se iska leke aao, free sale certificate leke aao." There's so many certificates they want. There's a lot of red tape. You लोग समझते नहीं, third world countries they don't understand certification क्या चीज़ है। वो उसका वो एक they use it as a means to bother people. जो कि थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड, फिफ्थ वर्ल्ड के एक तरीकेकार है, आप लोगों को तंग करते हैं, उनके लिए हर्डल्स पैदा करते हैं। That's when you make money in this country, in these countries. So that's what they do. They turn them into hurdles. So ये जो well vetted countries हैं, जिनका मैंने 4-5 जो मार्केट्स हैं इनका नाम लिया है, जर्मनी की मैं बात करता हूँ। जर्मनी की एक कंपनी है रीडा। A lot of people know Rida. It's a big company. Germany की, they buy a lot from Pakistan. रीडा का ओनर का नाम है कार्ल हुबर। कार्ल हुबर आया हमारे पास बैठा हुआ टिनोपाल में ऑफिस में, तो
ऐसी गपशप से हो रही तो कहता है कि सियालकोट की ऐसी ऐसी गली में मैं गया हूँ बच्चा जिसके तुम्हें भी नहीं पता। सो ही इज़ द क्लाइंट, और वो इतना उसमें इन है इस काम में कि वो सियालकोट में ऐसी ऐसी गली में गया हुआ, शायद हम में से कोई ना गया हो। हम लोग उसको समझते रहेगा क्या जाना है गली में, बट दे आर हियर फॉर बिजनेस। उन्हें पता है कि गलियों में ही, मोहल्लों में या इस तरह लोगों ने अपना शॉप्स बनाए हुए हैं और लोग घरों से बिजनेस कर रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग गुड क्वालिटी बिजनेस फ्रॉम सच सेटअप्स एज वेल। तो आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि बंदा जो है 70s 80s से सियालकोट को खंगाल रहा है और उसको पता है कि कौन क्या था और क्या बना है और किस तरह है। सो दिस इज हाउ यू डू बिजनेस बेसिकली। अगर आपने किसी मार्केट पे एक्सपोर्ट करना है, गो देयर एंड मीट पीपल। और आई रिमेंबर व्हेन आई वाज सेलिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन कनाडा, साइड पे मैंने इंस्ट्रूमेंट्स का भी सीन किया थोड़ा सा, एंड I would just stand outside the store with a bag on my shoulder, and I would wait for the guy कि मुझे देखेगा, और then he would look at me and then be like, अच्छा ठीक है। आधा घंटा मैं खड़ा हूँ, फिर उससे फिर देखा, उससे अच्छा बुला लिया, उससे मुझे आप भी अंदर आ जाओ। Now he calls me and I'm standing at the counter, मैं उसको दिखा रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट्स, मुझसे पूछ रहा है ये क्या है। ब्यूटी की होती थी बेसिकली, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने नहीं थी स्टार्ट की वहाँ पे अभी, तो वो ब्यूटी की सिजर्स वगैरह थी, तो वो मैंने वहाँ के उसको दिखाई, तो उसने कहा कि कंसाइनमेंट में रख दो, 30 डेज बाद आ जाना, बिक गई तो ठीक है, नहीं बिकी तो सामान वापस ले जाना। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू डू थिंग्स। यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी, यू हैव टू गेट योर फीट डर्टी, यू हैव टू फॉरगेट हू यू आर, यू हैव टू जस्ट सेल योरसेल्फ। आई रिपीट दैट अगेन, you have to sell yourself. You go to a client, you forget who you are. There is no ego. There is no time. जब आप क्लाइंट के पास गए हैं तो वक्त भी वहाँ पे फ्रीज हो गया। Forget about time, forget about day night, forget about बारिश धूप कुछ भी है। You're with the client, you want to sell yourself, you want to take an order, you want to do something that day. So आपका focus वही होना चाहिए। I really appreciate कि आपने like ऐसे client का नाम भी बता दिया, because people in Sialkot are super secretive, so I was actually shocked कि वो वैसे बहुत पॉपुलर है। Still, I mean, जो भी जितना भी हो ना, कोई हाँ जी, बड़ी बात। ब्रांड्स के साथ भी काम करो तो वो लोग भी नहीं बताते unless उन्हें as a show off होता ना, just generally saying I I feel there should be equal opportunity for everybody, और I'm a believer as well. So जो मेरा नसीब है वो मुझे मिलेगा, I think और जो आप सबका नसीब है आप मेहनत करोगे आप सबको मिलेगा, कोई मेरा छीन नहीं सकता। I think इस जनरेशन, आप लोगों की जो जनरेशन है उसमें बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, ये जो मैंने अपने बाकी भी स्पीकर्स के साथ नोटिस की है। We had a session with Mr. Hassan as well as Sanam, and he's a solid fellow. Right, and he was also very open about things. So you know, I mean, इससे बड़ा अच्छी synergy फैलती है इन सब चीज़ों से। हाँ, बस ऐसे है ना, if your milkshake is good, your customer will come to you over and over. You gotta be confident on your milkshake. True. जिसको मर्जी बताएंगे आपसे कौन बंदा खरीद रहा है, as long as they like it, the taste of it, you have no problem. Right. They're not gonna go anywhere. That is true, very true. So now my next question is that if somebody wants to start this business, what are the first few steps that they need to take? Interesting question. What I would do? Well, very first few steps, first you lace yourself with knowledge कि आपने सर्जिकल करना है, तो फर्स्ट आप ये देखें कि आपने किस मार्केट में जाना है, एंड अब एक मार्केट का पहले फिगर आउट कर लेते हैं, फिर आप देखें कि व्हाट आर द बैरियर्स टू एंट्री इनटू दैट मार्केट। अब उस मार्केट में जा रहे हैं तो कोई बैरियर तो नहीं है एंटर होने के लिए, और फिर आप बल्कि 2-3 मार्केट सामने रखें, उसमें आप देखें कि एक मार्केट ए है, उसमें जाने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट, क्या सर्टिफिकेशंस और क्या मीडियम्स की ज़रूरत है, देन यू हैव मार्केट बी, देन यू हैव मार्केट सी। आप उन तीनों को आपस में उसको कंपेयर करके देखें कि आपको किस में लगता है कि which you think is easier to get it, but do not go for one alone, go for all 3, but एक को प्रायोरिटाइज कर लो, 3-4 मार्केट्स रख लो और एक को प्रायोरिटाइज कर लो, and then simultaneously go for all 3-4. Do not be like अच्छा पहले इसको, be simultaneous, हर तरफ से उसको जाना। And okay, so once they have decided about the market, and then what's the next thing that they need to do? Do they need to get the physical samples? Yes, or absolutely. You need to start first of all you need to figure out the products you're going to sell. उसके बाद आप उस प्रोडक्ट के ऊपर पूरी महारत आपको होनी चाहिए कि वो बनती कैसे है और वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कहाँ होती है और इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। You gotta think Six Sigma style. If you know what Six Sigma is, Six Sigma basically you grab a pen या pencil, तो आप ये नहीं देखते वो खूबसूरत है, आप ये देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। So आप किसी चीज़ को देखते हो with a negative pessimistic mind, but ये सिर्फ इसी हद तक रखें, do not become a pessimist. That's not what I'm saying. लेकिन ये है कि आप Six Sigma का ज़रूर when you look at a product,
बी ए सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट और उसको उस नज़र से देखें कि इस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम, और जब आपको पता होगा आपकी प्रोडक्ट में इश्यूज क्या आ सकते हैं, यूनिवर्सल इश्यूज होते हैं हर प्रोडक्ट में, और आपको पता होगा कि इसकी प्लसेस क्या हैं, एंड देन व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट, फिर आप उसको जीत जाएंगे. ही विल नो दैट यू नो व्हाट यू आर सेलिंग, एंड व्हेन दे नो व्हाट यू नो यू आर सेलिंग, दे विल बी कंफर्टेबल विद यू. सो दैट्स अ रियली. All right, and what is the best way? I suppose हो गया, लेकिन कि clients को contact you would say कि Instagram वगैरह के through. नहीं, जो Instagram वाला चीज़ है वो तो मैं रिटेल में कर रहा था ना. Instagram वाला है, ठीक that's है, सही. directly. What about B2B अगर somebody wants to? B2B में you have to go speak to these organizations. ये जो है, first off you go to a like chamber या बना है, so you contact जो आपकी target market है, वहाँ पे जो चैम्बर है, ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है या बिजनेस का कोई वहाँ पे है हॉल, उसमें आप रब्ता करें. फर्स्ट ऑफ उन्हें बताएं आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, फिर दे विल गिव यू अ सर्टेन नंबर ऑफ इम्पोर्टर्स अपने इलाके के कि ये लोग इम्पोर्ट करते हैं हमसे, या ये प्रोडक्ट ये लोग इन कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं, आप उनसे रब्ता करें. सो यू कैन सेंड देम एन ईमेल, और I would send them a regular mail, actually, not an email. I would send them a packet with samples in it, free of cost, and I would basically हो सके तो कैंडीज भी डाल दूंगा, but that's the figurative speaking. लेकिन मैं I'd make it really nice और बड़ा अच्छा खूबसूरत सा उनको एक sample packet भेज दूंगा, और 3-4-5 clients को, then I'll wait for it to stick, so to speak, कि उनको किसको पसंद आता है, who gets in touch with me, and who basically just asks कि भाई कितने की है. So once you have a response, once you have a query, it starts. Price size तो start हो जाता है. इसमें मिलके I wanted to add one more thing. Veterinary side पे भी आए. You asked me a question about certification, and which is easier. Try veterinary and try Hong Kong and Singapore. वहाँ पे veterinary बहुत चलता है. Especially ये dog and kennel की जो instruments होती हैं बहुत ज़्यादा. And they don't require. And they're very rich too. And they don't require certification. No. That's good. Not for the animals. और वहाँ पे online you can sell to the doctors, and they don't care about money, how much it is. Hong Kong, Singapore, they're rich people, and they buy instruments expensive, and they like to look after their dogs and their pets. शायद वहाँ पे तो B2C का भी बड़ा scope है, because the warehouses in Hong Kong are much cheaper than anywhere else. So It's a free you port, can, huh? yeah, exactly. So you can just put your products in the warehouse, और वहीं से B2C भी निकाल Cash सकते हैं. shipment कर सकते Yeah, हैं. exactly. बिल्कुल cash shipment कर सकते हैं. Very good. All right, and do you think that in Pakistan we don't have access to good plants and machinery? We do. We do. We do. As a matter of fact, मैंने recently, this is the first in our industry what we did. Instrument के उस धोने का जो है सबसे एक important process होता है, ultrasonic cleaning. Ultrasonic में we use trichloroethylene, which is very carcinogenic as well. लेकिन यह है कि it's important, it is required. इसके बगैर surgical instrument की grease वगैरह साफ नहीं होती. So what we did, we worked with a company. It's called Nurista. It's from Lahore. They're a bunch of engineers. I had a dream to sort of steampunk my processes. Steampunk meaning a little bit of technology and a little bit of manual touch. तो मैंने steampunk किस्म का एक setup बनवाया है जिसमें it's a conveyor belt system. We clean about 26 instruments per minute, and it's 1 rupee an instrument उसकी जो cost है. Wow. और जो अभी current जो लोग manually कर रहे हैं, it's like 15-20 रुपए per instrument cost आती है. So that's 1 rupee per instrument, and it's just a conveyor belt. It goes through the वो सारे cleaning automatic bath. washing. हाँ, automatic wash होता है, automatic passivate होता है. पहले passivation के लिए we were taking anywhere between 24 hours and a lot of money and a lot of pain. लेकिन अब passivation हमारी within 30 seconds, 40 seconds हो रही है. So that changed my life And this overnight. This manually technology. before that. हाँ, सब manual. Wow. And you got it like made for yourself. Lahore Was से. it custom order? Or? Custom order. उसको बुलाया engineer को, उससे कहा भाई ये this is what we want you to do. And he's like, okay, I'll try it and I'll do it. I have another example here, same kind of example. Uncle Khawal की है. ये Anwar Khaja. इन्होंने they had a process जहाँ पे वो बॉल की जो है ना वो क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं कि बॉल की राउंड शेप कैसी है. जब स्टिच हो जाता है बॉल तो उसके बाद भी उसकी चेक करते हैं कि राउंड पूरा है क्या सिलसिला है, उसको किक भी करते हैं बॉल को. वो प्रोसेस इट वाज टेकिंग देम 5-10 मिनट्स पर बॉल, और वो भी स्पेशली जब मिस्त्री साहब हैं उनका मूड ठीक है और बॉल चेक कर रहे हैं, उन्होंने पास कर दिया तो बॉल पास हो गया. एंड ही वाज perturbed by it
कि यार ये इस प्रोसेस को हमने somehow टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आना है ताकि मैं ये जो मैनुअल एक प्रॉब्लम है ये इससे हमारी जान छोड़े. He went to NUST and he got some engineers from NUST. He came to Untitled Industry AKI. उन्होंने AKI आके एक मशीन बना दी with the cameras and stuff. और उसमें that machine inspects the ball, kicks the ball, और उसमें जो बॉल ठीक होता है उसको एक साइड पे कर देती है, जो बॉल खराब होता है एक साइड पे करती है. और वो 10 मिनट्स का प्रोसेस 1 मिनट में चेंज हो गया. वो 12 महीने चलता है, किसी बंदे की जरूरत नहीं है, कोई मिस्त्री बीमार हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो AKI also had a lot of फायदा with the local engineers. It's just see you got to think out of the box. आप ये मत समझो पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता है. Find people that do it for you. Very nice. That is actually very interesting. Like I have an example है, like they actually. अभी मैं sorting machine बनवा रहा हूँ. We receive volume instruments आती हैं, we receive different sizes. तो manual काफी टाइम लग जाता है, sometimes mix हो जाती है. So the same company is making sorting machine for us. We just drop the instruments in there और वो separate करके trays बना देंगे. So that. Wow. So we can do that here. I'm happy you asked me this question. No, I'm actually like, I'm sure everybody's मैं भी thinking of how they can implement that in their business. before we did this technology thing, I also thought कि पाकिस्तान में शायद ये नहीं हो सकता, ये plants नहीं बन सकते, लेकिन it is possible. There are people out there, and there are very intelligent people out there, and they are in Pakistan. Very nice. So when you're checking the surgical instruments, could you like just line up a few quality issues that mostly come up so that people who are trying to get it done from makers, they know what areas to specifically check? हाँ, आपने इसका raw material check करना है सबसे पहले. जब raw material आप किसी maker से instrument ले रहे हैं तो you have to make sure कि उसका chrome और carbon जो है वो as per spec है. It has to be as per spec. Client ने आपसे जो chrome carbon मांगा है या एक standard instrument होती है, cutting instrument का chrome carbon slightly ज़्यादा होता है as opposed to grasping instrument. ज़्यादा कटिंग और ग्रास्पिंग यहाँ बनती हैं. रिट्रैक्टर्स वगैरह तो I'm sorry, I'm not sure everybody knows these instruments. मैं तो मजे से बातें करूँगा. Maybe this is actually focused upon to सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे ठीक है. people should know. हाँ, तो ये जो ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक नीडल होल्डर्स और हीमोस्टैट्स और ये सब तो लो कार्बन और क्या कहते हैं लो क्रोमियम इंस्ट्रूमेंट से बनता है AISI 410 से. और जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रोबिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब बनती हैं AISI 420 से. और जो ये बर्तन है ये सब AISI 304 से बनते हैं. नॉन मैग्नेटिक, पहली जो दो मैंने आपको बताई है, these are magnetic instruments जिनको मल्टीजेंटिक भी कहते हैं. और जो 304 है, this is नॉन मैग्नेटिक, जिसको ऑस्टेनाइटिक भी कहते हैं. तो ये आपने देखना है सबसे पहले रॉ मटेरियल ठीक है. सेकंड, आपके इंस्ट्रूमेंट जो है ना एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए डू योरसेल्फ अ फेवर, गो टू डिन. ये जर्मनी की एक लाइब्रेरी है. I don't think anybody will ever tell you that. DIN book. Find yourself DIN books. 45 euro की मिलती है स्टैंडर्ड. उसमें you can download किसी भी इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड और आप उस स्टैंडर्ड की बेस पे इंस्ट्रूमेंट बना के भेजो जर्मनी या elsewhere. You will never fail. अगर आप ये अंधेरे में तुक्के लगाते रहोगे आपको कभी नहीं पता चलेगा कि फॉर्सेप है तो वो जिसने बनाया था वो किस तरह का बनाया था. हीमोस्टैट है तो किस तरह का, मस्कीटो है तो किस तरह का था. मस्कीटो का आपको तभी पता चलना है जब आप एक स्टैंडर्ड देखोगे. सो गेट योरसेल्फ अ डिन बुक. उस पहले डिन बुक पूरी 90s में शायद आपको पता हो, वो इतनी पूरी एक पेपर बैक आती थी और चंद ही लोगों के पास थी. लेकिन अब वो चैप्टर्स उन्होंने बना दिए हुए एंड दे सेल इट बाय चैप्टर्स. ये नॉर्मंडी की एक लाइब्रेरी है डिन. फाइंड दैट एंड फॉलो दैट. And that should be enough for you to get into this business. Raw material हो गया, specs हो गई, और उसके बाद it's your pizzazz. इसके बाद ये आप पे है how you sell it. Right. Acha, and anything that you want to tell the audience, or perhaps a suggestion that you would like to give the audience regarding the surgical industry, या फिर how it has been progressing so far, और इसमें क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, what are the things that should drive them towards the industry and away from it as well? I mean, if you're okay with handling metal, then go into this industry. इसमें बहुत business Okay with बहुत juice है. metal as in? Metal has its own you कह लो कि impact. You have to deal with hydrochloric acid. You have to deal with the high temperatures. You have to deal with a lot of noise in the factory.
जब आप उसको अपने पास ले आते हो, there's forging, there's all sort of. Why I say that? Because I have experience in furniture manufacturing, I have experience in surgical manufacturing, I have experience in garments manufacturing. I personally like garments. Clean. Yeah, neat, clean, and a lot of fun. But surgical is a lot of money as well. So is garment. So it just really depends how you do something, and it really depends what you like. For me now, I like anything business now. Like for me, मुझे आपको कि गाड़ी भी बना के बेच दूँ, I'm most likely to do that too. So, लेकिन for you guys, you're starting now. तो उसमें I feel कि you shouldn't shy away. Get into this business and see where it goes. आप इसमें समुद्र में छलांग लगा फिर देखें, स्विमिंग तो आप सबको आती है, see what you do. And how important is the product knowledge? Because a lot of people get into an industry without Absolutely prior important. Absolutely product important. knowledge. Absolutely. It's like getting in your car. If you don't know how to drive it, you'll crash it. Simple. अगर आपको product knowledge नहीं है, then you'll just waste your time. And how can they learn about the product? गाइड नहीं करेगा. हाँ, तो product knowledge आपको आएगा from ये DIN जो है, the DIN I gave you information of. You can use that. There's another book, K-Medic ने बनाई है. K-Medic. It's surgical instrumentation 101. You can actually get it off Amazon. They also give you a lot of knowledge on surgical instruments. Alright, that's great. You can check that out. और आपका Seriously. have you experienced with makers a lot because यहाँ पे तो सियालकोट में हर गली मोहल्ले में makers बैठे हैं surgical के. So are their quality like, for example, if somebody gets a sample order, so for the first time obviously they will not have their own setup to do manufacturing for even the samples, right? They will obviously probably Go go to the to the vendor. vendor, a maker. हाँ. तो उनकी product quality, is it good enough to be sent to the हाँ, client? बिल्कुल, absolutely. लेकिन you have to make sure that they're selling you the right product. सबसे पहले vendor कोशिश करेगा कि उसके पास जो extra पड़ा है, जो घटे ना, वो आपको मरने दे किसी तरह. But you're gonna make sure कि ये नहीं होता. So that is why I mentioned product knowledge. You have to have that. You have to lace yourself with knowledge. You need to know कि कितने उसके दांत हैं, उसके कितने के ratchets हैं, उसकी बट्टी कितने की है, उसके जो हैंडल किस तरह का होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. और आपको इस स्टील का भी पता होना चाहिए, और थोड़ी सी आप मार्केट से भी नो हाउ ले लें कि उस वेंडर का क्रेडिट कैसा है और उसका काम कैसा है. वैसे नॉर्मली वेंडर्स जो है अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं बस. That's good. Right, so last question from my end and then we'll have Achha, I have actually another question that COVID-19 से surgical industry पे क्या effect आया? Have the exports increased or decreased? Because in most of the industries they have decreased. But how? I mean, there was a decrease in surgical instruments in the beginning. जब lockdowns वगैरह काफी तेज हुए, so there was a slowdown. And I was also surprised myself. I had thought कि surgical instruments तो कभी slow down नहीं होती. लेकिन जब ये slow down हुए तो we obviously had questions कि भाई ये factory तो बंद हो रही है और आप हमसे instruments क्यों नहीं खरीद रहे? Because जिन warehouses के साथ हम काम करते हैं, हमें we are used to sending like a container or two every month. तो एक उसका सारा एक process चल रहा होता है, आपको पता है सारे मामला, employees and everything, 500 से 1000 के करीब employees हैं. उनके भी सारे मामला होते हैं. So I asked my client कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, there is no sports, there is no बल्कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुए 3-4 माह तो लॉकडाउन था ना स्टार्ट में, there was no traffic, there was nothing happening, so people weren't really getting into accidents, people were not breaking their bones or sort of getting hurt, so we were not getting any business. So please do not stay home. Go out and have fun. So on a lighter note, yes, we did have a problem, that has come back. Business has sort of restored. It actually has come back faster. Oh, that's and good. harder. Because I thought surgical is one industry to get even in COVID times because people were still going to the hospitals for That's what I different thought as reasons, well. right? Yeah. लेकिन वो कह रहे थे कि अब सिर्फ हम ज़्यादातर ये जो कोविड है उसी को देख रहे हैं, जो सर्जरीज थे उनको अवॉइड किया जा रहा है, उनको डिले किया जा रहा है मेडिसिन देके, ताकि हॉस्पिटल के बेड्स अवेलेबल रहे. So first 3-4 months तो वो सर्जरी वर्जरी जो है ना कोई लाइफ एंड डेथ मैटर भी कर रहे थे, otherwise all surgeries were put away. Right. डिले करते हैं. Okay, so my last question is any suggestion that you would like to give our audience, our upcoming entrepreneurs? Persevere, stay strong, stay positive.
और लाइक इमरान खान घबराना नहीं है. Now we will head on to audience question answers round. Just raise your hand और एजाज़ आपको आगे माइक दे देंगे. Do you have any questions? Okay. So myself, Dr. Hassan, I'm a physiotherapist by my profession. I'm going to Dubai in the next month. Alright. So what would you like to suggest me, being a beginner, would you like to suggest me to do this surgical business in Dubai? Absolutely, absolutely. आप दुबई जाइए and go meet the doctors and just walk into a hospital. Tell them you're selling instruments, and they'll take you to the person who's sort of responsible for buying instruments, or at least they'll tell you where to go. तो आप उसमें जाइए, definitely इसको करें. दुबई मैंने किया वो business and it's easy there. और उसमें certifications के भी, as long as you have certificates like GMP, CGMP and ISOs, you're good. उसमें कोई इशू नहीं है. ब्यूटी का काम भी आप कर सकते हैं, सर्जिकल भी कर सकते हैं. सर इसमें होजरी या फिर सर्जिकल दोनों में से अगर मैं चूज करूं तो सर्जिकल बेस्ट रहेगा या होजरी बेस्ट रहेगा? दोनों ही क्लिनिक कर लेते हैं आप. I would do both. यानी मिडिल ईस्ट में सर ये if you have your hands in both, आप दोनों कीजिए. हाँ, do not sell yourself short. You're capable of doing both at the same time. सर वन मोर क्वेश्चन, मेरा दुबई से नेक्स्ट यूके का प्लान है विदिन वन. Very good, very good. सो यूके के लिए आप फर्दर क्या सजेस्ट करेंगे? सेम चीज को मैं लेके वहाँ पे भी मूव करूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. It's just a different. See, we are same people. We are humans. हमारे सिर्फ रंग ही फर्क है, कद फर्क है. हमारी fundamentally we are the same people. आप उनके पास जाएंगे, उनकी सिर्फ रंगत फर्क होगी और उनकी सिर्फ बोली फर्क होगी. उनके एटीट्यूड्स तो हमारे जैसे हैं, उनकी डिजायर्स और उनकी जो सोच है ऑलमोस्ट pretty much हमारी जैसी है, एक्सेप्ट कि जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके वो डिफरेंट है और हमारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है. लेकिन फंडामेंटली यू कैन अप्रोच टू देम जस्ट लाइक यू अप्रोच एनी पाकिस्तानी. It's easy. Do not think they're different people. They're not. They're just like us. Sir, for the beginner, one last question. सर्जिकल टूल्स में ब्यूटी मेकर्स ज्यादा बेहतर है या डेंटल टूल्स या फर्दर? डेंटल में आ जाए ज़्यादा बेहतर है. ब्यूटी में कंपटीशन है. ब्यूटी में चाइना आपको कंपटीशन देगा, quite a bit actually. वियतनाम, चाइना, वियतनाम खास तौर पर. Go stay in dental actually. हाँ, वो इसी की जो आप जैसे आपने मेंशन किया, लेकिन since we are talking about surgical here, so I suggest that you, as opposed to beauty, you stay at the surgical side, dental side especially. Thank you so much. You're welcome. And good luck. अगर आप जान मैं रिप्लाई कर सकता हूँ. डॉक्टर साहब आपका गुड नेम? आपसे आपका एक सेकंड बस रुकिएगा. आपका नाम? मुझे नजर नहीं आता. You sound weird. Your name? My name is Dr. Hassan Zafar. जी डॉक्टर साहब, आपने पूछा कि आप कौन सा बिजनेस करें. तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. आपने 3-4 इंडस्ट्री इकट्ठी करवा दी है, डेंटल की भी, सर्जिकल की भी और इसमें होली की भी, ब्यूटी भी. वाई नॉट कि आप एक सीमेंट की फैक्ट्री लगा रहे हैं. सीमेंट का काम भी बड़ा अच्छा है, ये क्यों नहीं करते आप? सर सीमेंट में इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं खुद से लगाना चाहता हूँ. तो सर अगर इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपको दे दूँ तो क्या आप कर लेंगे इसको? सर सोचना पड़ेगा इस पर. क्या सोचेंगे इसके साथ? ओके, थैंक यू वेरी मच आपके जवाब का. एक चीज़ बात है, सर ने आपको जो चीज़ बताई है और जो आपने भी बड़े अच्छे तरीके से सुनी है, मैंने भी बड़े अच्छे तरीके से सुनी है. आप वो काम करें जिसका प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास है. जो आप काम करते हैं, जिसको आप सीखते हैं, जिसको आपको नॉलेज है, आप वो वाला काम करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. मैं आपको कह दूँ तो आप स्टील मिल लगा तो आप सुबह स्टील मिल का कलर नहीं लगाएंगे, लगेगी भी नहीं. तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब आपको वो काम करना चाहिए जिसका आपको नॉलेज है, प्रोडक्ट नॉलेज. और प्रोडक्ट नॉलेज होना ये आपके बिजनेस की एक बेस है. बिल्कुल डॉक्टर, जैसे मैंने कहा, जिसमें आपका हाथ पड़ता है वो काम जरूर कीजिए. डोंट स्टॉप. सर इसके लिए तो सर्जिकल ही बेस्ट रहेगा ना मेडिकल में? हाँ, वो आपके लिए एक्चुअली इट्स अ नाइस चॉइस. जैसे सर आपने बोला कि
वो तरीका भी जान लें और इफ यू हैव नॉलेज। और अगर कोई बायर को पता चले कि ये दो का रहा है लेकिन सर्जिकल ये इतना बहुत बड़ा it's a vast industry, yes. तो वो लेकिन उसमें उसमें पूरी तरह से प्रयास नहीं कर पाएंगे पूरी तरह नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर्जिकल में आपको ये देखना होगा कि आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने कौन सी लाइन को आपने शुरू में जो है टच करना है। उसमें यू कैन ईदर स्टार्ट विद इंस्ट्रूमेंट सेट्स, आप इसमें इंस्ट्रूमेंट सेट्स बना के दे सकते हो, जो कि तरह कबाहत होती है काफ़ी सेट्स बना के बेचना, एक एक दो पीस उसमें डलता है। सो आई वुडंट एक्चुअली रिकमेंड दैट, स्क्रैच दैट। यू गो विद डिफरेंट लाइंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि ह्यूमोस्टैट्स हैं। अगर आप ह्यूमोस्टैट्स में स्पेशलाइज करते हो तो आप नीडल होल्डर भी साथ कर लोगे, आप स्पंज फॉर्सर भी साथ कर लोगे, आप अपना टाउल क्लैम्प भी कर लोगे। सो यू विल एंड अप हैविंग 3-4 लाइंस। तो उसमें वो फिर जो उसकी जो एक ब्रेड्थ है ना ये इंडस्ट्री की, वो थोड़ी सी ज़रा कंट्रोलेबल हो जाती है। देन आहिस्ते आहिस्ते यू कैन एक्सपैंड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, यू कैन गेट इनटू ट्रैक्टर्स, यू कैन गेट इनटू probes and speculums and biopsy forceps and whatnot. Lately आप उसमें जा सकते हो, लेकिन स्टार्ट में यू कैन स्टार्ट विद दीज इजी प्रोडक्ट्स। और ये they're like staple, ये दाल रोटी की तरह है सर्जिकल में, हीमोस्टैट्स एंड नीडल होल्डर्स, और ये बहुत ज़्यादा बिकते हैं क्वांटिटी, like they sell a lot and they're in low price and they're easy to manufacture, they're easy to actually get from the vendor as well. तो उसमें आप later on you can get into specialized products, retractors and everything. सर एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने स्टार्ट में बोला कि टेक्नोलॉजी इसमें सर्जिकल टेक्नोलॉजी इसको मार नहीं दे सकती है कि ये हाथ से हैंडमेड मैनुअल बनते हैं, बिल्कुल। तो जैसे ये फुटबॉल की आपने इंस्पेक्शन थी उसकी, तो क्या बोलेंगे फ्यूचर ये भी अब मैन्युफैक्चरिंग में आप इसको यूज कर सकते हो टेक्नोलॉजी को, लेकिन ये वो मेरा कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी आएगी उसमें सी इफ टेक्नोलॉजी कम्स देन अदर कंट्रीज कैन एक्चुअली मैन्युफैक्चर इंस्ट्रूमेंट्स एट होम। जैसे कि 3D प्रिंटर आ गया, 3D प्रिंटर आ गया तो एनीबॉडी कैन प्रिंट एनीथिंग सिटिंग ऑन द डेस्क, वो कुछ भी बना सकता है उससे, उनको मैन्युफैक्चर की जरूरत नहीं रहेगी, राइट? वॉल्यूम में नहीं बना सकते, जस्ट एन एग्जांपल। तो उसी तरह जब टेक्नोलॉजी अगर अवेलेबल हो जाती है टू मैन्युफैक्चर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमसे कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि इफ टेक्नोलॉजी इज देयर तो फिर बिजली तो सस्ती है ना बाहर, जो आपकी जो अपना G1 कंट्रीज में बिजली सस्ती है, बल्कि फ्री है प्रीटी मच, गैस वैस का मसला नहीं है। सो टेक्नोलॉजी रन करती है ऑन बिजली एंड गैस। जब टेक्नोलॉजी ले आते हैं उसमें ह्यूमन की जरूरत तो नहीं होती ना। काफी हद तक इनकी टेक्नोलॉजी आ गई, इसमें लेथ में मिलिंग में अब ये CNC बट दे स्टिल रिक्वायर अ ह्यूमन टू ऑपरेट दैम, वो रहेगा यहीं पे। अब CNC वगैरह नहीं जो आती काफी है, हद तक कम होते हैं। हाँ, उसमें एक लेबर कम हो जाती है, मैनुअल लेबर, लेकिन ये काम रहेगा यहीं पे, क्योंकि जो CNC ऑपरेटर है वो बाहर अब किसी को बहुत महंगा पड़ती है। यहाँ पे CNC ऑपरेटर 25-30 हज़ार में रख लोगे, आप 35-40 हज़ार में रख लोगे, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ CNC मशीन यू रनिंग और द काइंड ऑफ CNC सेटअप यू रनिंग। अब बाहर चले जाओ, CNC मशीन है तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलेगी, और सेकेंडली जो आप उस कोई बंदा आपको हायर करोगे CNC मशीन को रन करने वाला, लाखों डॉलर्स को महीने के दे दोगे आप, so I mean साल के। So that is not something actually viable as opposed to a competitive issue जिसको कहते हैं ना between other countries and Pakistan, उसमें ही काम पाकिस्तान में ही रहेगा। टेक्नोलॉजी अगर आती है तो वो आपको मैन्युफैक्चरिंग में ही बेनिफिट देगी, फायदा हमें ही है उसका ये नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी आने से बिजनेस पाकिस्तान से जब हमारे हाथ से निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, I have a question. अच्छा जी, मेरा नाम हाफिज खालिद है, आपके शायद अंकल थे ज़फरुल्ला जी, बिल्कुल ज़फर साहब, मेरे कज़न कज़न थे आपके। जी। वो और मैं इकट्ठे स्कूल कॉलेज वगैरह इकट्ठे थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो ना बड़ी अच्छी दोस्ती थी, मेरा चक्कर लगता रहता था, तो आपसे तारफ़ आज ही हुआ है। तो इसमें ये था कि एक तो सबसे पहले जो नए स्टार्टर हैं, हम तो चले पुराने हो चुके हैं, उनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना आजकल कोई पूछता है तो वो कहता है सर्टिफिकेशन आपके पास कौन सी है, सिंगल यूज़ के लिए, रीयूजेबल के लिए, तो वो काफ़ी एक तो कॉस्टली है। तो एक पूरी दुनिया में सर्टिफिकेशन एक होनी चाहिए, ये नहीं कि हर मुल्क हर मार्केट ने अपना कर दिया है जी, 10,000 पर फैमिली, $10,000 पर फैमिली, $5,000 पर फैमिली, रशिया में, चाइना में, इस तरह में। तो इसमें ईजीएस्ट मार्केट कौन सी है और सिंगल यूज़ और रीयूजेबल की रेशो क्या है,
जो एक्सपोर्ट की है या प्रोडक्शन की है? इजिएस्ट मार्केट जो है ना वो तो जैसे मैंने बताया कि वेटनरी ही है। सर्जिकल में वो प्रोडक्ट आ गई ना जी? जी वेटनरी प्रोडक्ट्स, हाँ जी प्रोडक्ट आ गई और मार्केट इसके लिए इसमें हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो ये गया। सबसे इजी है। उसमें आपको ज़्यादा लाइसेंसिंग वाइसेंसिंग का इशू नहीं है फॉर वेटनरी प्रोडक्ट्स अलोन। लेकिन सर्जिकल है वो हर जगह रेगुलेटेड है, इस रेगुलेटेड प्रोडक्ट उसके लिए सर्टिफिकेट्स होना लाजिम है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अपना कोई स्टैंडर्ड बनाए उसका एक इस तरह जैसे चाइना या अमेरिका वगैरह ने बनाया हुआ नहीं है? होगा। पाकिस्तान ने इसको तो बनाया करवाना है, चाहिए ना, इनको करवाना पाकिस्तान ने चाहिए। बनाया है ड्राफ्ट की सूरत में। ड्राफ्ट का आपको पता ही है, चैम्बर ने काफी मेहनत की थी ड्राफ्ट को पीछे रखने के लिए। ड्राफ्ट पाकिस्तान ने बनाया है बट ड्राफ्ट से हम भी घबरा गए थे। तो अभी रेगुलेटरी साइड पे आई डोंट थिंक कि पाकिस्तानी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ उतना जो है- हमारे तो जितने डिपार्टमेंट है ना वो तो डराने के लिए बने हुए हैं ना जी। उनका पैसा बनाना है और डराना है, डराना दो है, मकसद है। yes, yes, ये थाने सब डिपार्टमेंट थानेदार थाने ऐसे ही। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसमें सर्जिकल जो है इसमें सर्टिफिकेशन तो जरूरी है। ठीक है। चाइना जो है वो एक्सपेंसिव है। हमने $24,000 लगाया है इसके ऊपर सर्टिफिकेशन के ऊपर चाइना में। और लेकिन अगर आप यूरोप साइड में चले जाएं तो दैट्स चीपर। आप ISO आपको लेने हैं, सिर्फ 2 ISO लेने हैं। Simple है, CE लेना है या ISO लेना है। CE, ISO and 2 ISOs basically, 1 CE. That's about 3-4 लाख रुपए कॉस्ट है। It's cheapest अगर आप कंपेयर करें। US is like $6,000 FDA के लिए, फिर FDA के साथ वो ISO भी मांगता है और CE भी मांगता है। चाइना जो है वो आपको CE, ISO और CFDA ये तीनों चीज़ें मांगता है। जर्मनी will only ask you for ISO, CE. So and अगर आप यूरोप जाते हो तो it's just CE. चलिए I'm sorry, MDR भी UK तो आ रहा है ना जाते जी, हो अब तो MDR भी आ रहा है ना जिस जी। तरफ यार MDR आ गया, UK वाली साइड पे MDR आ गया, तो वहाँ पे आप दोनों पे। MDR का जो है सर्टिफिकेट लेते हो। सो इट्स एक्चुअली उनकी लोकल मार्केट की अपनी सिक्योरिटीज हैं जिस वजह से उन्होंने ये रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। आई इमेजिन इट्स बिकॉज दे हैव इंश्योरेंसेस, दे हैव सोशल सिस्टम, उसमें इंश्योरेंस का काफ़ी एक प्ले है। इंश्योरेंस वाले काफ़ी इसमें लॉबी करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स ठीक होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में उन्हें इंश्योरेंस के क्लेम्स वगैरह उन्हें भरने पड़ते हैं, इट्स वेरी कॉस्टली फॉर देम। सो इट्स फॉर लायबिलिटी, इसको लायबिलिटी कहते हैं। सो लायबिलिटी की वजह से वो रेगुलेशंस ज़्यादा है इसमें, सिंस दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लायबिलिटी इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे तो कोई परवाह नहीं करता, लेकिन वहाँ पे तो सू कर देते हैं जी आप लोग छोटी छोटी बात में। एक एग्जाम्पल है छोटी सी, हम बड़े शौक से देते होते हैं अपने घरों में बैठ के, यू माइट एंजॉय इट। सू करने वाला मामला है। एक चोर गया अमेरिका में किसी घर चोरी करने के लिए, तो वहाँ पे बड़ा रूल है, जब स्नो पड़ी हो ना तो आपने अपना ड्राइव में शवल करना है। तो उन्होंने ड्राइव में शवल नहीं था किया हुआ। अब वो चोरी करके बाहर निकला और स्लिप होकर गिर गया। उसने मालिक मकान पे सू कर दिया कि इसने जो है ना अपना ड्राइव में शवल चोरी नहीं सही करने दी। मुझे चोट लग गई। उन्होंने कहा तुमने चोरी की है, चोरी का केस लहरा चला, वो वाला केस लहरा चला, उसको चोरी की सजा मिली, लेकिन उसको उसका खमियाजा भी मिला कि भाई इन्होंने ड्राइव में जो है शवल नहीं था किया हुआ, तो उसको वो भी पैसे ले गया वो। सो केस इन पॉइंट के वहाँ पे लायबिलिटी इश्यूज बहुत है। दैट इज व्हाई वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज काफी स्ट्रांग रहती हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जी इसमें एजेंसी सिस्टम बेहतर है या आप आउटलेट रखें कहीं अपना किसी भी मार्केट में, अफ्रीका में, या इफ यू हैव द ह्यूमन रिसोर्स कि आप अपना वहाँ पे अपना आउटलेट रख सकते हैं तो गो फॉर इट, गो फॉर योर ओन सेटअप। अगर आपके पास इफ यू हैव लेस सेट ऑफ आर्म्स सो टू स्पीक, तो फिर तो आपके पास एक ही चारा है कि आप एजेंट्स और बनाएं, देन यू एक्सटेंड योर आर्म्स दिस वे। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा क्वेश्चन बेसिकली मैं भी स्टार्टअप ब्रांड और बीन बैग्स की टीम से ही हूँ। हमारे पास कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस आते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्टर्स फैमिली से होते हैं, उनके पास तो गाइडलाइंस होती हैं। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि वो पूछते हैं कि जब हम देखते हैं कि हम एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करें, उसकी भी उनको गाइडलाइन मिल जाती है, लेकिन हर कोई छोटा मोटा जो भी बंदा स्टार्ट करता है ना, तो वो एग्जीबिशंस पे नहीं जा सकता। तो इस तरह के ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस हमारे पास आए कि उनके लिए क्या होना चाहिए कि वो अगर एग्जीबिशंस पे नहीं जाते, वो स्टॉल्स पे नहीं जाते, तो वो कौन से कैसे I've never been to a single exhibition myself. और वो प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जिन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर बंदा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे क्लिक कर रहा होता है और उसके थ्रू क्लाइंट्स ले रहा होता है। कुछ को मिले भी, कुछ ने हमसे शेयर भी किए, कुछ लोगों को लिंक्डइन के थ्रू बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो इसमें आप क्या प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, these platforms are very good।
और ये जो एग्जीबिशन वाला है, दिस इज प्लेड आउट अ लॉट. कोविड में खास तौर पे एग्जीबिशंस आर नॉट रियली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस. कोविड से पहले था एग्जीबिशंस में. एग्जीबिशन होता ये है कि यू गो एंड यू मीट द क्लाइंट, फेस टू फेस एक हो जाता है. जो एक फेस टू फेस है, जो उसमें आप तर होते हैं, वो टेलीफोन या इंटरनेट या उसमें नहीं होता. So if you meet a client, it's very likely he doesn't like your instrument, but he likes you very much, and he wants to do business with you. वो कहेगा ठीक है यार, मैं इंस्ट्रूमेंट सही करवा लूँगा, बंदा ठीक है. So see, it's like this. When you meet somebody, they might like you, they might like your impression, they might like the way you speak, or they might hate you. It's either or, right? So when you meet somebody, उसका impact ज़्यादा है. उसमें तो मैं हर चीज़ आप ये नहीं कहूँगा कि एग्जीबिशन वगैरह भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन लेटली इसमें आसानी हो गई है ना, अरब हेल्थ वगैरह आ गया है, एंड इट्स वेरी इजी टू एक्सेस. हाँ, एंड इट्स वेरी इजी टू. अभी लोग गए हुए अरब हेल्थ में रिसेंटली, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर देयर, वो कोविड की वजह से फंस गए वापसी आते हुए. तो कहने का मकसद है कि यू कैन स्टिल गो टू एग्जीबिशंस, और थोड़ा बहुत तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर एग्जीबिशंस. Exhibitions are a good way to make clients. बहुत अच्छा शेयर किया कि वेटनरी की साइड पे है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हेल्थ मैंने अटेंड किया था, उससे लास्ट ईयर भी किया था. उसमें वेटनरी से रिलेटेड बहुत कम स्टॉल्स थे. मेडिकल एंड सर्जरी डिमांड बहुत है उसमें. उसमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्टॉल्स अवेलेबल थे, लेकिन वेटनरी में बहुत कम थे. इसके अलावा ब्यूटी से रिलेटेड बिल्कुल स्टॉल्स नहीं थे. हाँ, ब्यूटी में चाइना इज एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टफ, इनोवेटिव काम काफ़ी कर रहा है चाइना. सो ब्यूटी जो है उसमें तो वी मे नॉट बी एबल टू फेस चाइना एट ऑल. लेकिन सर्जिकल में क्योंकि आप इनोवेशन नहीं लेके आ सकते इन द प्रोडक्ट. अब एक हीमोस्टैट है, हालस्टेड मस्कीटो के नाम से हीमोस्टैट है, जो 200 साल से चल रहा है. यू कैन नॉट चेंज इट. वो हालस्टेड साहब ने बनाया हुआ है, वो उसी स्टाइल में रहेगा. और एक और चीज़ उसी बड़ी स्टैंडर्ड में होती है रहेगा. कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो होती हैं उसमें, फॉर एग्जांपल आई बिलोंग फ्रॉम शूज इंडस्ट्री, और हमें एवरी सीजन वी हैव टू कम अप विद अ न्यू कलेक्शन. हमें थोड़े अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है. वी हैव टू हायर एक्सपेंसिव डिजाइनर्स टू कम अप विद समथिंग जो कि लोग पसंद करें. बट विद सर्जिकल प्रोडक्ट्स सेम थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज मैनेज द क्वालिटी एंड यू गुड टू गो. दैट इज द यूनिफाइड प्रोडक्ट्स. Everybody knows them. There is nothing different in them. Nothing I think that is the best part of surgery. अगर ये बना रही है हीमोस्टैट, तो मैं बना रहा हूँ हीमोस्टैट, तो वो सेम होगा. सिर्फ क्या है उसमें पैकिंग में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, हमारी प्राइस में, और ये डिलीवरीज में चेंज आ एक्चुअली सकता है. राइट. और पता है क्या इसमें ये बाकी, क्योंकि अब काफी ज्यादा दुनिया में ग्लोबल मार्केट बनती जा रही है, इसकी वजह से ऑल कंट्रीज आर कम्पीटिंग. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट शूज, तो चाइना ब्रिंग्स आउट द बेस्ट डिजाइन्स, ठीक है. इंडिया बहुत अच्छे डिजाइन्स बनाता है. हम लोग जो है फिर हमें बार बार उनके साथ कम्पीट करने के लिए ना वी हैव टू इन्वेस्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. क्योंकि पहले जो क्लाइंट, जितना मैंने देखा है, पहले क्लाइंट साइकी ये होती थी कि दे यूज्ड टू सेंड यू के मेक अस दिस, और हम बना के भेज देते हैं, they would buy it from us. अब ये they ask us कि हमें दिखाओ आपने क्या नया बनाया है. Change हो गया. So ये जो ना अपना ये जो ball is in our court now, and I don't like that ball. No. I really don't like that ball. Expensive तो ball है. exactly right. तो इसीलिए सर्जिकल का सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है ना सोचने में, वो ये है कि यूनिफाइड प्रोडक्ट्स, and that's the best part. दिन लोग ले आए, उसके मुताबिक बनाए उसको, and just make sure you do it right, and you get the right clients. मेरा सवाल है, आपका माशाल्लाह इतने सालों से तजुर्बा है. मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने सोशल मीडिया का बताया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सारी चीज़ें आपके समझते हैं कि आपका तजुर्बा क्या कहता है कि सबसे फास्टेस्ट और सबसे ज़्यादा जल्दी इसमें यानी कि रिस्पॉन्सिव है, वो कौन से रस्ते हैं? वो एक्टिवेशन है या ये टेक्नोलॉजी है, या आप क्या समझते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया? The fastest would be exhibition. Fastest would be exhibition. अगर आप exhibition को कर सकते हो फौरन, if you have enough funds available, 10-15 लाख तो लग ही जाता है ना उसमें exhibition में. अगर आप Instagram पे हो तो 10-15 लाख वाला मामला तो नहीं है ना उसमें. It's comparative, right? तो more risk, higher money intensive is your exhibition. It'll give you more response. You'll go meet the clients. आप बंदे वहाँ से customers से मिलोगे. First meeting में, first आपको travel में हो सकता है, first engagement में आपको business ना मिले, but you'll learn a lot of things. आपको knowledge बहुत मिलेगा. ये सिर्फ 50-50 probability है कि आपको customer मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन mostly मिल रहा है. Mostly आपको you end up leaving a mark somewhere in somebody's mind
आप कार्ड वार्ड एक्सचेंज करते हो, आप वापस आते हो, you get a call, you get an email, आपको इंक्वायरी वगैरह आ जाती है. So exhibition is a stronger way. अगर आप if you want fast results, अगर आप थोड़ा सा slowly उसको लेके चलना चाहते हो, depending on the funds you have available, तो फिर ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म है. that's good. इसके इंटरनेट के मुताबिक आप क्या कहते हैं? लिंक्डइन है, इंस्टा है, और लेटली अमेजोन है. अमेजोन ने पाकिस्तानी मार्केट्स, पाकिस्तानी स्टोर्स को अलाउ किए हैं, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क टू गेट ऑन अमेजोन. तो अमेजोन को ज़रूर फोकस करें. आई वुड रेकमेंड अमेजोन एक्चुअली. लेकिन अमेजोन में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज सच नहीं बेच सकते आप ज़्यादा. वहाँ पे आप डायग्नोस्टिक किट्स ज़्यादा बेच सकते हो, तो वो भी खासी स्पेक्ट्रम्स आप बेच सकते हो. देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स दैट यू कैन सेल. सर्जिकल टूल्स आप बेच सकते हो उसके ऊपर. And there's a lot of volume that is being sold on Amazon. फिर Amazon से आप start होते हो, then you can move to Alibaba as well. You can go to Instagram, especially. Instagram पे काफी चलता है. So these are, LinkedIn is a very good platform. LinkedIn पे जरूर अपना प्रोफाइल बनाएं. चेक किया आपने LinkedIn? हाँ, उस पे जरूर अपना प्रोफाइल बनाएं. So the second last Thank you so question. much. अच्छा सर, आपने जो बात की ना, इसमें बहुत से लोग ना मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं इस चीज़ को कि आपने कहा कि एग्जीबिशंस. मैंने खुद देखा था कुछ ऐसे लोगों को जो कि जिन्होंने स्टार्ट ही एक एग्जीबिशन से किया. इससे पहले वाली आपकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया. प्रोडक्ट नॉलेज, मेकिंग, मटेरियल, स्टफ, एवरीथिंग इग्नोर करके स्ट्रेट अवे एग्जीबिशन के स्टॉल पे बैठे हुए थे विदाउट प्रॉपर लाइक प्रोडक्ट नॉलेज. तो एग्जीबिशंस फिर उसमें इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी. अगर आपके पास प्रॉपर, हाँ, if you go unprepared, हाँ, if you go unprepared, then you're just wasting your time and you basically आप client के ज़हन में अपना एक image बना दो. आप जो भी XYZ कंपनी लेके आप बैठे हो, वो आपके पास आएगा, आपके पास नॉलेज नहीं है, वो आपसे पूछेगा यार ये क्या इंस्ट्रूमेंट है. आप आगे से क्यों कोई उल्टी सीधी बात कर दोगे, वो कहेगा आपका नाम उसका राइट ऑफ कर देगा अपने दिमाग में, यार इनको तो कुछ नहीं पता. So they will never come to your company. We'll take the last question. Acha, abhi we'll have a networking break so you can ask the questions. We'll take just one last question from Ahmed. अस्सलामुअलैकुम सर. मेरा नाम नबीब है और मैं पाकिस्तान का फर्स्ट राशियन इंक्यूबेटर है मिजान, उसका CEO हूँ. मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. जो अभी डिस्कशन हो रही थी, 2 क्वेश्चन है आपसे. नंबर 1 थिंग इज दैट जो नए यंग बच्चे आते हैं दैट आर विलिंग टू स्टार्ट देयर स्टार्टअप, what advice do you think you should give to them कि बेटा इतनी क्योंकि they don't have that much of investment in stuff. वो ज़्यादातर वो उनकी कोशिश ही होती है कि हम खुद से ही bootstrap कर लें या खुद से जितना कर सकते हैं हम लोग उसको कर लें. ठीक है. What initially you think that कि बेटा इतनी इन्वेस्टमेंट से जरूर कोशिश करना है मतलब. और एक और होता है कि हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट पीछे भी रखनी है क्योंकि गलतियां मिस्टेक करोगे. ऑब्वियसली बात है कि मतलब व्हेन यू स्टार्टिंग अ बिजनेस ज़्यादातर प्रोडक्ट नॉलेज कई लोग तब लेते हैं एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिकली खुद ही उसमें उतर के गलतियां करते हैं फिर सीखते हैं. हाँ, but there should be some theoretical knowledge as well. हाँ. दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है और being a person that is in the industry, if a person is coming to you, if you think as an investor, if a person is coming to you, if a student is coming to you, or a startup is coming to you, what things do you will see in that startup while you're investing into it? Second. All right. Answer to your first question is you should at least have $500,000 in your pocket to start, at least. This will cover your computer, your internet, and your basic certification जो आपको start में चाहिए, and a few samples, and a bottle of Coke. So this will cover that. और second जो आपका question है, I'm sorry, what was that again? Could you just remind me? If you have to invest into a startup, what? Yeah. Okay. Yeah. I would first off I'd like to see जो startup को जो lead कर रहा है बंदा या बंदी जो भी है, how strong they are and how driven they are. देखिए वो driven कितने हैं, वो कितना persevere कर रहे हैं उसको. मैं test करूँगा उनको, उनके patience को पहले. I'll try to rile them up first. उनका patience check करूँगा कितना है. I'll ask stupid questions to see how they respond to it. So I'll see how strong they are and how sticky they are to their goal. So that is how I look at them. Now that I know, I'll come to you for investment and then आप जितना मर्जी कर लो patience के लिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है. Let's Perseverance. ये अपना आपने secret बता दिया. Now I can come. जी please last question.
मेरा ये क्वेश्चन है कि अपना कोई बेस्ट एक्सपीरियंस एग्जीबिशन का शेयर करें जिससे आपने कुछ लर्न किया हो और इनके हमें कुछ सजेस्ट करें। मेरे एग्जीबिशंस का कम ही एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन एक फ़नी एक्सपीरियंस ज़रूर है। मैं कनाडा से आया वापस फर्स्ट आफ्टर ग्रेजुएटिंग 2005, तो फर्स्ट एक हमारा एग्जीबिशन लगा हुआ था इधर BC में, एंड माय कज़न वाज सॉर्ट ऑफ स्पीयरहेडिंग इट। तो उन्होंने मुझे कहा कि आओ यार ज़रा मैं कहीं जा रहा हूँ तो तुम खड़े हो जाओ स्टॉल में। मैंने कहा आई डोंट इवन नो व्हाट वी आर सेलिंग हियर, क्या कुछ काउंटर में पड़ा है, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन सी हैं, मुझे बता के तो जाएंगे क्या है। He's like ये ब्रोशर्स पढ़े हैं, देख लो इसको। तो ये बड़ी अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो एक डॉक्टर आया, अब वो सारी न्यूरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थी, आई हैड नो आइडिया क्या है। एक डॉक्टर आया, उसने कहा जी ये क्या है। मैंने उसको इंस्ट्रूमेंट को पकड़ा, मैंने उसको अच्छी तरह चेक किया, मैंने ब्रोशर निकाला, मैं ये है इस नर्व हुक। तो वो हंस पड़ा, उसने कहा भाई आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा I don't know what I'm doing here. I don't know what these instruments are. This is my cousin's stall. So this is my experience. So what I'm trying to say here, जो अब unprepared जाओगे तो you'll end up like me. आपको डॉक्टर भी हंसेगा, लोग भी हंसेंगे, भाई तुम इधर खड़े क्यों? What are you doing at the counter? और if you go, अगर यही मैं वहाँ पे सीख के खड़ा होता, मुझे पता होता कौन सी इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है जिसको मैं देख रहा हूँ, वही डॉक्टर मुझसे पूछता, उसको मैं एजुकेटेड रिस्पॉन्स देता, तो मोस्ट लाइकली I probably would have sold him on a tractor there. एक लाला ब्लेड ट्रैक्टर पड़ा था, 1.5 लाख का लगा हुआ था, मैं शायद उठा के ले जाता। उसको काफी शौक से देख रहा था, I just didn't know what it was. लेकिन after that उसको मैंने रटे लगाया उसको, that was too late. So that is my exhibition experience. Yeah. All right, guys. So I think we're done and. मेरा एक क्लास जी जी। जैसा कि 90% सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो सियालकोट में बना रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे एक अपना नाम बनाया है, मतलब कि हम ब्रांड को सेल करने की बजाय हम खुद सेल करें, हम एवरी कंपनी अपना खुद नाम बनाए, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्रांड को सेल करने की बजाय हम अपना एक नाम खुद बनाएं और खुद हम उसको सेल करें। फॉर एग्जांपल हम मार्को को सेल करते हैं, मार्को आगे सेल करके वो ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है कि हमने अभी तक इतनी देर से हम सर्जिकल इंडस्ट्री में हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है और क्या होना चाहिए कि हर किसी को अपना नाम बनाना चाहिए। इसमें actually I have a very wonderful experience that I gained in Quebec, Canada. मैं कनाडा में था, क्वेबेक में एटमॉस सर्जिकल एक कंपनी है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, उसके साथ बैठ के बातचीत हो रही थी, तो ही पुल्ड आउट अ कैटलॉग जो डायमीडा की थी। उससे कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट्स भाई बना के दे आते। मैंने कहा आपको पता है ये डायमीडा किसकी है। उससे कहा जी आई डोंट नो, ये जर्मन कंपनी, इट्स हिलब्रोज ना डायमीडा। सो हिलब्रो ने ब्रांड बनाया है जर्मनी में, और दे आर एक्चुअली गिविंग अ वेरी हार्ड टाइम टू अदर जर्मन कंपनीज, और वहाँ से बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और इसमें ब्रांड बन जाता है। लेकिन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में जब आपने ब्रांडिंग की तरफ आना है, यू आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इन्वेस्टमेंट, यू आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ एम्प्लॉइज, यू आर टॉकिंग अबाउट रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स। अब आपने जब गैर मुल्क में एज अ ब्रांड आपने उसको सेल करना है, तो यू आर लुकिंग एट लायबिलिटीज। आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपके ऑन बोर्ड होनी चाहिए, क्योंकि आपको फटाफट लोगों ने डॉक्टर्स ने सू करना शुरू कर देना, हॉस्पिटल ने सू करना शुरू कर देना। You need distributors के साथ contracts, you need all sorts of things. There's a plethora of things you need to do to become a brand yourself. और ये नामुमकिन नहीं है, तो ये सियालकोट ने कर दिया, ये भी कर दिया। डायमीडा बनी हुई है और खासी चौके छक्के लगा रही है वहाँ। All right, so. That's very good. कहाँ पे है वो? That's good. That's good. जो मैंने मुझे अपनी इंटरनेशनल अगर करना चाहिए, उसके लिए मैं प्राइस जो है वो कितनी मैक्सिमम रख सकता हूँ। वो मुझे ऑर्डर आ गया, इंक्वायरी है, तो ऑर्डर उसमें मुझे पास कर दिया। अब मैं उसके लिए कितनी एक प्राइस रख सकता हूँ। जैसे अब लोकल मेकर हैं, उन्होंने भी एक्सपोर्ट शुरू कर दिया थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
उसमें मैं कितना मार्जिन वगैरह अपना हाँ। ये तो बस अपना ही होता है हाँ। इसमें अब आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं और मार्केट में उसमें मार्जिन बचा कितना है, उस प्रोडक्ट में जूस कितना रहता है। अब देयर आर प्रोडक्ट्स इन सर्जिकल इंडस्ट्री जिसमें आपके पास 3-5% से ज़्यादा मार्जिन है ही नहीं। यही अपना हीमोस्टैट लीडर वगैरह सारे इसमें 3-4-5% से मार्जिन है ही नहीं। रीयूजेबल इंस्ट्रूमेंट पे आते हो तो आप 50%, 25%, 100% डिपेंडिंग आप किस किस्म का बना रहे हो, आपके क्लाइंट किस किस्म का है। रीयूजेबल में आपके पास क्लाइंट्स हैं ऐसे भी जो कि हमारी तरह स्टार्टअप है, जो कि रीयूजेबल स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन सस्ता, मिड ग्रेड, डस्का स्टील, गुलाती तैयारी टाइप का एवरीथिंग इस तरह करके जो है ना वो रीयूजेबल करना चाहते हैं। कुछ क्लाइंट्स हैं जो रीयूजेबल लेते हैं जर्मन स्टील का बना हुआ, गुलाती बना हुआ, एवरीथिंग गुलाती जी, पैसिवेटेड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो इट विल डिपेंड। सो यू नीड टू रिसर्च कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो मिडिल ईस्ट में बेच रहे हो तो आप में कितने प्लेयर्स ऑलरेडी हैं और रीजनेबली मेरे ख्याल से आपको 10 से 25% मार्जिन रखना चाहिए। आप उससे ऊपर आप जाते हैं तो कस्टमर भी भागने वाला मामला है और परेशान होने वाला मामला है, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मार्जिन एंजॉय कर सकें अनलेस यू ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट और उसमें आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे लो मार्जिन जितना आप चाहोगे। लेकिन ये प्रोडक्ट्स तो 200 साल से बन रही हैं, तो इसमें आपका सेंट्रल सेलिंग पॉइंट जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी है और ऑन टाइम डिलीवर कर रहे हो, आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हो, एज पर स्पेक दे रहे हो, एस्टिमेट को रास नहीं लग रहा। दिस इज व्हाट इट इज सेंट्रल सेलिंग पॉइंट। इसलिए ये मार्जिन आपको 2, 3, 4, 5% की रेंज में आपको जो है ना इसको हिट करना है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। All right, Ji, thank you so much for being a wonderful audience, and we'll be moving towards our networking and tea break, and then you can ask all the questions you want, जितनी मर्जी देर तक, preferably 20 minutes maximum. ठीक है, उसके बाद चलिए। So, but again, I'm sorry we started late today, and inshallah the next time ऐसा नहीं होगा. Thank you so much, Mr. Mudassir, for being with Absolutely for us. having me here and my wife as well. Yes, please. He brought his wife, which I'm very happy about. So I hope you like the show as well. समझ आई जो मुदस्सिर भाई ने आपको तो सब कुछ रटा हुआ होगा पहले से। ठीक है, but once again thank you so much. He's like a brother to me, absolutely, and thank you so much once again. It's a little token from us. Oh, you didn't have to. I don't have any token. No, that's fine. You gave us the token. I just want a picture with it. So I just pull it. Thank you so much.